Hello friends, welcome to Jajit Defense Warrior. My name is Jyoti. In this video, we discuss about the biology first chapter, which is diversity in living world. तो इसमें हम ये जानेंगे कि diversities in living world क्या है, मतलब what is exactly it. Diversity in living worlds that inhabits the earth from their taxonomic perspectives. मीन्स डाइवर्सिटी जो है हमारे अर्थ में इनहेबिट करती है एक टैक्सोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव से, एंड इट्स हैव द डिफरेंट क्लासिफिकेशंस. डाइवर्सिटीज़ के डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ है, उनके एट्रीब्यूट्स हैं, एक्सेप्शंस फंक्शंस हैं, एक्सेप्शनल फीचर्स हैं ऑफ द लिविंग वर्ल्ड. मीन्स द टैक्सोनॉमी एंड द क्लासिफिकेशंस ऑफ देयर्स. We just discussed about the living things, properties, their attributes, their function, their exceptions, features, their functions of the living world. Okay, these are the factors. Moreover, the concept of this chapter is to help and to inhabit the फर्दर बायोलॉजी चैप्टर. मतलब इस चैप्टर का पढ़ने का सिर्फ एक बेसिक सा यही मतलब है कि हम अपनी बायोलॉजी का व्हाट आर द बेसिक्स थिंग्स, हम बेसिक्स क्या होती हैं, बायोलॉजी स्टार्ट हुई तो कैसी हुई, कहाँ से हुई, क्या हुआ, क्यों ऐसी चीज़ें हुई, क्या ऐसा रीज़न था कि हमने नाम रखे, क्या ऐसा रीज़न था कि हमने क्लासीफाइज किए. इस चैप्टर का दैट्स द बेसिक रीज़न to put in the syllabus. Okay, so the thing is, what is diversity in the living world? मतलब basically what is the meaning of diversity in the living world? Okay, so the diversity means the world is dominated by a plethora of living organism live in the land, waters, ice and desert. Means वो सारे जीव जंतु जो जिंदा हैं, जो सांस ले रहे हैं, या तो वो अर्थ पे वो, या तो वो लैंड पे हो, वो वाटर में हो, वो आइस के अंदर हो, या वो डिजर्ट्स पे हो. दैट्स ऑल आर द लिविंग थिंग. ओके, एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अ यूनिक विथ रिस्पेक्ट टू द स्ट्रक्चर्स, बॉडी फंक्शंस, जेनेटिक मेकअप एंड सो ऑन. सो जितनी भी हमारे अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दे हैव अ यूनिक विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर. मतलब वो सब एक दूसरे से यूनिक है. हम लैंड पे रहते हैं, हमारे पास फीचर है लैंड पे रहने के लिए. फिशेस वाटर में रहती हैं एंड दे हैव अ कैपेसिटी टू बिल्ड, कैपेसिटी टू सर्वाइव इन वाटर्स. पेंगुइन्स हो गए, वो आइस में रहते हैं. पेंगुइन्स के पास वो कैपेसिटी होती है, वो फंक्शंस होते हैं, वो यूनिकनेस होती है जो हमारे पास नहीं होती है कि वो आइस पे रह सकते हैं. डिज़र्ट्स पे हो गए, डिज़र्ट्स पे बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं. हम जब जाएंगे डिज़र्ट्स पे, हमें बहुत सी ज़्यादा, मतलब डिज़र्ट्स का टेम्परेचर और हमारे नॉर्मल लैंड का टेम्परेचर बहुत ही डिफरेंट होगा. एंड दिस इज़ द थिंग, द डिफरेंट लिविंग थिंग्स have different functions and different uniqueness with respect to each others. This is the thing. The living organisms found in different habitats and have different structure, organizations of functions developed as per a condition of their habitat. So जितने भी animals हैं, उनके different functions, different habitats, different जगह के according हो जाता है. मतलब I have an example. मेरे पास example, we have two types of different clothes, one for the winters and one for the summers. When जब summer आता है, we wear a very light clothes like the loose shirts, loose t-shirts, and when जब ठंडियाँ आती हैं, सर्दियाँ आती हैं, उस टाइम पे हम मतलब गर्म कपड़े पहनते हैं. क्यों? बिकॉज हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, वो फीचर नहीं है कि हम विदाउट क्लोथ या फिर विदाउट वन क्लोथ्स वी सर्वाइव इन विंटर, बट वी कैन सर्वाइव इन समर. सो दीज आर द फैक्टर्स. बट
the different animals have different functions. Like the dogs, they can survive in both the environment. Okay, so these are the things. Different types of classes of organism inhabit different environment is known as biodiversity. Means the different types of classes organisms inhabit their environment is known as biodiversity. Biodiversity is basically things that the different types of animal, different types of classes inhabit their environment. मतलब उनका एक अलग सा एनवायरनमेंट है. वी हैव अ एनवायरनमेंट दैट कि हम अर्थ पे रहते हैं, हमारे साथ ग्रासेस रहती हैं, हमारे साथ फ्लावर्स रहते हैं, हमारे साथ मतलब एनिमल ग्रासेस, ये सारी चीज़ें मिलके एक एनवायरनमेंट बनता है. हमारे आसपास की जो भी चीज़ें होती हैं एनवायरनमेंट होता है. एंड दिस एनवायरनमेंट इज ऑल्सो नोन एज द बायोडाइवर्सिटी. मीन्स द different types of classes of organisms inhabit their environment is known as biodiversity. Okay, the reason that are warm and humid have their more diverse organisms are also called the mega. So the reasons that the mega biodiversity, this is also important term, mega biodiversity. Humans have evolved from apis. हम जो humans हैं वो apis से evolve होते हैं, but अभी हम apis की तरह बिल्कुल नहीं दिखते हैं. We are very different because हमारे टाइम टू टाइम जो हमारे स्किन्स में, हमारी बॉडी में, हमारे फंक्शंस में जो डेवलपमेंट्स आए हैं, जस्ट लाइक कि अपडेट्स आए हैं. Apis, you all knows Apis, but nowadays Apis and we totally different. But we are the organization, and we also evolved from the Apis. Okay. Every individuals have different skin, hair color, eyes, and most important, all of the genetic makeups. Means the means every individual have different functions, different skin color, different hair color, different eyes, and different genetic makeup. The genetic, everyone have different genetics, everyone has different cells. Okay, so the one question is raised, which means the genes of every individual are different. Yes, it is. Every individual have different genetics, different genes. Okay, so thus to identify better, we have created groups of, मतलब इस चीज़ को और बेटर तरीके से समझने के लिए कि व्हाट आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल डिफरेंसेस, वी हैव सम पॉइंट्स दैट हाउ वी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. मतलब हम एक दूसरे से कैसे अलग हैं, क्या है चीज़ें जो हमारे को अलग करती हैं, बेसिक क्राइटेरियाज क्या हैं कि हम अपने आप को ये जज कर पाएँ कि येस वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, डिफरेंट न्यूक्लियस हमारे अंदर प्रेजेंस होते हैं. Body design which amplifies the makeup of cells are the presence of single or multiple cells. Okay, so the जो हमारी बॉडी डिज़ाइन होती है, जो कि हमारे सिंगल और मल्टीपल सेल्स से बन के होती है, ये सिंप्लीफाई करता है कि वी आर डिफरेंट, वी आर ऑर्गेनाइज फ्रॉम द सेल्स. फूड प्रोडक्शन, हमारे फ्रूट प्रोडक्शंस, मतलब हम एक दूसरे अपना खाना कैसे बना के लेते हैं, हम किससे लेते हैं. ओके,
how we give our nutrients, how we. Then the level of organization is basics of organism carrying out photosynthesis. So the level of organization in bodies of organisms carry out photosynthesis. Okay. In animal, sorry, just a sec. In animal, an organism of one body part, developments of body, specified organization of different organism. एनिमल्स में जो हमारी बॉडी पार्ट्स होते हैं, डेवलपमेंट ऑफ बॉडी और डिफरेंट फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये क्लासिफाई करते हैं. ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशंस ऑफ सिस्टम्स. मतलब हाउ इज organization system, how is organ systems, how is organization. Okay, so or classification systems, as you all know, is divided into two methods, into two types. Okay, the one classifying them into a plant and animal. So the first one is, we classify the system in two methods. First in plants and animal, and second in 5 kingdoms. So the first two kingdom classification. The 2 kingdom classification systems were proposed by the Charles Linnaeus. He classified organism into 2 categories, plants and animal. Means the first जो हमारा organization system था, which was in two terms only, in plants and animal, was classified, मतलब divided by the Charles Linnaeus, who was the first classify किया था इन्होंने कि क्लासिफिकेशंस हमारी डिवाइड होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए. मतलब प्लांट्स अलग होने चाहिए, एनिमल्स अलग अलग होने चाहिए. बट उसके बाद से विक्टर इन्होंने क्या किया कि हमारे जो क्लासिफिकेशन किंगडम सिस्टम था, इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया. द फर्स्ट पार्ट इज मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटेरिया एंड एनिमेलिया. सो एज यू नो, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटेरिया एंड एनिमेलिया. सो he classified in 5 parts. Okay, and then we have to study the hierarchy. What is the hierarchies? Hierarchy of classifications. Charles Linnaeus also arranged the organism into different taxonomic groups at different levels. Okay, जो चार्ल्स लिनियस थे, उन्होंने डिफरेंट टैक्सोनॉमी को डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड किया. एंड व्हाट वाज दैट एट? इट वाज द किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स एंड स्पेसीज. सो after this is the hierarchy. So we have total 7 hierarchies. Okay, and who invented this? The hierarchy was given by Charles. Okay, into the 7 parts. And what are the characteristics of 5? Okay, so in next video we'll discuss about in brief of hierarchies of the classifications and the characteristics of the 5 kingdom, which was also given by the Charles. Okay, thank you so much.